we are going to discuss about the how we control the industrial pollution and reduce the environmental degradation. It is necessary to ensure the quality of environment and maintain the ecological balance. So, how we control the environmental degradation? There are so many ways. In this way, we can control the industrial pollution. So, dear students, see the first point. First, minimizing use of water for processing by reuse and recycling it in 2 or more successive stages. Second, harvesting of rainwater. That means we store the rainwater by the different methods through the rooftop rainwater harvesting, either construction of the dam, either tankers, etc. And this water used to meet the requirement by the industries. And third important point is treating hot water and industrial wastage. So, we should release the hot water after cool it. As a result, it does not affect on the aquatic life and less pollute the river, either pond. And we should dispose the industrial waste into a particular place. So, बच्चों क्या है इस गर्म पानी को हमें ठंड करके ही नदी या तालाब में छोड़ना चाहिए ताकि वो पर्यावरण को कम प्रदूषित कर सके। और जो सॉलिड वेस्ट है और लिक्विड वेस्टेज हैं उसको हम एक निर्दिष्ट जगह में उसको फेंकें ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके अलावा देखो फोर्थ पॉइंट, एफॉरेस्टेशन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. We should planting the trees inside the industrial belt. We should develop the granaries in the industrial belt and control the air pollution and maintain the ecological balance. Next, apply 3R concept. 3R: reduce, reuse and recycle. We should recycling the metal like iron ore, aluminium, either anything plastic, glass. So, this can be recycled and used again and again, and in this way we can reduce the industrial pollution. So, next, government policies. Already discussed, so many industries like big either small, they ignore the pollution norm. So, government strictly implement the rules and regulation of industrial pollution, and every industry, it may be small, either medium, either large, either big. So, they should implement either obey these rules and regulation and helps to control the industrial pollution and environmental degradation. Next, upgrading existing equipment. So, most of industries are need to use the latest technology or the latest machinery and upgrading the existing technology that reduce the environmental pollution, and this latest machinery release the less sound and less smoke. And those industries are use the huge quantum of water and also pollute the groundwater. So, they should use the groundwater legally. The next, fitting smokestack, electrostatic participator, fabric filter, scrubber and internal separator. Why? To reduce the emission of smoke by the industries. So, those industries are release the more smoke into the environment, they must set up the fitting smokestack, electrostatic participator, fabric filter and scrubber, internal separator. And otherwise we can use the oil and gas instead of the coal. In this way we can reduce the either emit of the smoke into the environment by the industries. And another point is, those industries or those activities are release the sound, they must use the silencer in machinery that lead to the low sound, and control the noise pollution. And next, use noise absorbing materials.
इंस्टेड ऑफ ईयरबड, कानों में लगाते हैं कि साउंड ना आए, इनके जगह हमें क्या यूज करना चाहिए कि ऐसे मटेरियल यूज करना चाहिए जो नॉइज को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो सबसे पहले हमें वाटर को प्रोसेसिंग करना चाहिए, चाहे रीयूज या रिसाइकलिंग हो। उसके बाद दूसरे में हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, बरसात के पानी को हमें स्टोर करना चाहिए और बाद में उसको इंडस्ट्री में उपयोग करना चाहिए। थर्ड, गर्म पानी को छोड़ने से पहले उसको ठंड करना है, फिर उसको नदी में या तालाब में छोड़ना है। या इंडस्ट्री से जो भी गंदगी निकलते हैं, चाहे कार्बनिक हो, चाहे अकार्बनिक हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, उसको हम एक पर्टिकुलर जगह में डिस्पोज करना है। नेक्स्ट, हमें पेड़ पौधे लगाना है इंडस्ट्रियल बेल्ट में। नेक्स्ट, हमें 3R कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, जैसे कि स्क्रैप आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथिलीन, ठीक है, या मेटालिक मिनरल्स से जो प्रोडक्ट बनते हैं उस सभी को हमें दोबारा उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट इनके खिलाफ पॉलिसी बनाए, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन के रूल्स रेगुलेशन को या नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं तो उसको सख्त इम्प्लीमेंट करें या लागू करें। इसके अलावा भी क्या है ना, जो इंडस्ट्री से ज़्यादा धुआं निकालते हैं उस इंडस्ट्री में हमें क्या लगाना है, फिटिंग स्मोक स्टैक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर एंड इंटरनल सेपरेटर। एंड जहाँ कोल को इस्तेमाल किया जाता है जो इस इंडस्ट्री के द्वारा, तो वहाँ पर हमें क्या उपयोग करना चाहिए ना, कोल के जगह में ऑयल या नेचुरल गैस को उपयोग करना चाहिए, ठीक। और जो मशीनरी से ज़्यादा साउंड उत्पन्न होते हैं वहाँ हमें साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। इसे बहुत सारे कारण हैं, इसके अलावा भी आप दूसरा भी कोई कारण लिख सकते हो, दूसरा भी तरीका लिख सकते हो जिसके द्वारा हम एनवायरमेंटल को डिग्रेडेशन को कम कर सकें और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम कर सकें।